So we have seen how to find out the work. हमने देखा कि वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. नहीं. ठीक है, so let's move ahead. Now I will talk about another part जहाँ पे हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं. We have learned how to तीन चीजें सीखना है हमें. हीट कैसे कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी, so that we can apply first law of thermodynamics. So हीट के बारे में आपको क्या पता है, ये बताइए. कैसे हीट कैलकुलेट करते हैं? हमने एक चैप्टर पढ़ा है, मेजरमेंट ऑफ हीट. हीट कैलकुलेशन हमें कैलोरीमेट्री में पढ़ा है. कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट. अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम मेजर करते हैं. ओके. ठीक है, तो वी हैव अ वर्ड व्हिच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. And we know that heat absorbed or heat released is ms delta T. ठीक है, तो गैस भी जो हीट एब्जॉर्ब करता है according to this equation ms delta T, mass of gas, specific heat capacity of gas into temperature of gas. but last class हमने देखा कि since Q depends on path. Depends on path. So for gases, there is no specific value of specific heat capacity. It depends on path taken. So for liquid and gas solids, S was constant. कि हाँ अच्छा ये मरकरी है, इसका S ये है. कॉपर है, इसका S ये है. But when we come to gases, for the same gas hydrogen, S will never be same value. It will depend on कि constant pressure पे आप state change कर रहे हैं तो अलग आएगा, constant temperature पे कर रहे हैं, sorry constant temperature पे तो Q absorb, constant volume पे कर रहे हैं तो कुछ अलग आंसर आएगा. Is it fine? Right. Yes. So यहाँ पे S is also path function. Fine. Very important. S is path function. See, generally gases को ना हम mass में measure नहीं करते हैं. We don't take it in grams and kilograms. Generally, gas is measured in moles. Right. Generally, gas is measured in moles. So instead of specific heat capacity, so we have molar heat capacity. Specific molar heat capacity. Given by C. तो S और C में इंटररिलेटेड होंगे क्योंकि ये Q जो है ये ms डेल्टा T है और अब जो Q हो जाएगा वो NC डेल्टा T हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली आप S को C में कन्वर्ट कर सकते हैं. S क्या होता है? S होता है इन किलोग्राम. ठीक है कि जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. राइट. गॉट इट गुराशी? यस. तो आप इस S को C में कन्वर्ट कर सकते हो. C इज जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. तो हम कैसे S को C में कन्वर्ट कर सकते हैं? S और C के बीच में एटॉमिक मास का बस डिफरेंस है कि आप S है और उसे आप मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो एटॉमिक मास, तो आपके पास C आ जाएगा. तो कन्वर्जन आना चाहिए. Now very important thing in this thermodynamics is you have to be very careful with the units of C in exam. लिखा रहेगा molar heat capacity and unit will be of specific heat capacity. That means they will need to convert it also. मैंने C देखा हुआ है to represent heat capacity पहले. Fine. So
be careful with the units of S and C in question. They will write it down. I have seen question, they have written it down molar heat capacity and they have given C in kilogram. So they want you to convert it into moles first. Right. इधर तक समझ में आया? Yes.